Good morning, everyone. A very good morning to all of you, bachcho. We are live. We are back on ExamDost. We are back with the ESE Officers Series for solving engineering services PYQ. तो फटाफट सभी लोग आ जाइए भाई. This is the last session of electric circuits. The final session based on electric circuit. Come on, everybody, join quickly. एंड आकाश भाई कल वाला वीडियो देखना, मैंने बताया कहां पे है प्रूफ, और वहां पे प्रूफ अपलोड हो भी चुके हैं. कल के वीडियो का लास्ट सेक्शन देखोगे तो उसके अंदर मैंने बता रखा है, मैंने ओपन करके भी दिखाया कि कहां पे मैं अपलोड करूंगा, और वहां पे अपलोडेड है फ्री डाउनलोड्स यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ जेईई एग्जाम्स. ओके, 3 स्टेप करने. एग्जाम दोस्त ऐप पे जाओ, फ्री डाउनलोड्स में जाओ, यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ में जाओ, जेईई एग्जाम में चले जाओ, ऊपर ही फोल्डर मिल जाएगा आरआरबी जेईई सीबीटी 1 चैलेंज प्रूफ. चलिए let's get started, बच्चों. First question, what is the driving point operational impedance? I need the driving point impedance ESE 2007. So what we will do is, this will become SL, so 1 into S, 1 parallel, this is the case. Two plus 3S. So the answer will be A. The answer will come out to be A. Next question, again ESE 2007. ZS is given. I need to know the value of R1. I need to know the value of R1. Based on the value of ZS, you must tell the value of R1. ट्रिक क्या है बेटा, उसको प्रैक्टिस ही करना पड़ता है. थेवेनिन नॉर्टन में मुश्किल क्या है? वीटीएच निकालने के लिए ओपन सर्किट करो, आई नॉर्टन के लिए शॉर्ट सर्किट करो, और बाकी आरटीएच के 3 केस होते हैं. नेटवर्क देख के समझ आ जाता है कौन सा केस लगाना है. मुझे लगता है अगर आप नेटवर्क बेसिक स्ट्रांग रखे हो तो थेवेनिन नॉर्टन में दिक्कत आनी नहीं चाहिए. अगर थेवेनिन नॉर्टन में दिक्कत आ रही है, माने आपको नोडल मैश केसीएल केवीएल में दिक्कत आती है, क्योंकि थेवेनिन नॉर्टन बनता तो वहीं से है ना. चलिए, व्हाट विल बी ZS? एक्चुअली ऑल द 4 पैरामीटर्स आर अननोन. Okay, this is the parallel combination. Okay. Now,
Now this is s square plus 8s plus 15 by s square plus 4s. So you can do s square plus 4s. इसमें अब देखा जाए, try making the same sort of equation. C1 C2 R1 R2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं. Divided by s square C1 C2 R1 plus R2. अब ऐसे तो ये मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. एस और क्या कर सकते हो. इसको या तो नेटवर्क सिंथेसिस से जाया जाए, जहां पे हम एडमिटेंस इम्पीडेंस का सहारा लेते हैं. तो अगर मैं एक और तरीके से ट्राई करूं, देखो, जेड एस 1/SC1, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/1/R2, इस तरह से. मुझे ZS को अगर मैं ऐसे ब्रेक कर लूं तो बात बन जाएगी. अब सबसे पहले मुझे 1/SC1 अलग करना है. रुको. 1 बात है 1/SC1 कैसे अलग करोगे. s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15 एक 1/S की टर्म अलग होनी चाहिए. कैसे किया जाए. 1/S इसमें से हमें निकालना है. पार्शियल फ्रैक्शन में लगा नहीं सकता डायरेक्टली, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है. तो पार्शियल फ्रैक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड. वन बाय एस के लिए s+4 अगर यहाँ पे बन जाए, s+4 कैसे बनाओगे. s इंटू s+4 है, s+4 अगर बन जाए बात बन जाएगी. सीरीज में इम्पिडेंस ऐड होती है.
ये देखना पड़ेगा यार, एक बारी रुको जरा। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बनेगा नेटवर्क सिंथेसिस से मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ से नहीं बन पाएगा ना अपना। बात है यहाँ से तो कोएफिशिएंट ही ऐसा नहीं आ रहा ना कि एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर नीचे 1 आ जाए। या तो R1 R2 शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2। एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू दोनों का सम। बट फिर भी बड़ी मेहनत हो जाएगी। 4 हो जाएगा 1/C2 R1 प्लस R2। बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा ये तो। ये वैल्यू 15 हो जाएगी, ये 8 है। तो ये वैल्यू अगर 15 होते तो 8 ही आनी चाहिए। x इंटू 15 इक्वल टू 8, तो ये वैल्यू 8/15 आनी चाहिए। नहीं, लंबा जाएगा यार इस तरीके से तो बहुत। आप ये देखो इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें। इस फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट हो गया एडमिटेंस इम्पिडेंस की मदद से तो बात बन सकती है। मैं ये सोच रहा हूँ बस 1/s अलग करने की देर है। 1/s कैसे अलग किया जाए। या तो इसमें से इसका s से इसको अगर डिवाइड कर दें, s+4 है ना नीचे, लेकिन हमें सिर्फ s अलग करना है। क्या कर सकते हैं, तो डिवाइड बाय s प्लस s कर नहीं यार, पॉलिनोमियल थोड़ी ना डिवाइड होंगे। 1/s भी नहीं मिलेगा ना, पहला तो कोएफिशिएंट अगर आप इससे डिवाइड करते हो तो अगर इसको ऐसे करें, देखना। तो नाउ आई विल डिवाइड इट बाय 15/4s। ठीक है, 15 15/4s। नाउ सब्ट्रैक्ट 8s minus 15s/4 32 17s/4 plus s square। So this will be 15/4s plus ठीक है, s plus 17/4 by s plus 4। अब इसमें से कांस्टेंट टर्म अलग करनी है। अब देखना जरा, 17/4 से 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16/17। ठीक है, 16/17 s/17।
ये देखो हो गया ना काम, ऐसे करना था। देखो अब मैं आपको सारे कंपोनेंट की वैल्यू बता सकता हूँ। 1/17/16, एस को नीचे ले आओ, s/17 को 17/s को नीचे ले आओ, दिस विल बी 17/s, ये देखो अब कंपैरिजन से क्लियरली R2 is 17/16। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे करते हैं? इसे नेटवर्क सिंथेसिस बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क सिंथेसिस। तो डिवीजन से जाना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है, नेटवर्क सिंथेसिस है, ये टॉपिक ही एक्चुअली गेट में नहीं है। ESE 2007 Z0 और Z इंफिनिटी दे रखा है, R1 R2 पूछ रहा है। नाउ yesterday I told you beta at S equal to 0 capacitor will be open, so Z is R1 plus R2, S tending to infinity capacitor will be short, so Z will be R1. So such kind of question are very easy, which you have to solve at 0 and infinity. ESE 2007. Next again ESE 2007, impedance function has poles and zeros, Z0 is 8. What is the function of ZS? बेटा सॉलिड स्टेट रिलेज अलग से टॉपिक होता है, पूरा जो आपका गेट के अंदर आता है उसमें सॉलिड स्टेट रिलेज नहीं होता। सॉलिड स्टेट रिले माने जो सेमीकंडक्टर से बनने वाले रिले हैं। S+2 S+4 K लगा लो, डिवाइडेड बाय now Z0 D. So answer is D. Again ESE 2007. The pole zero diagram, ESE 2007, pole zero diagram of ZS in the figure is K equal to 1, X is pole, O is 0. Poles are at -1/√3 and -√3, 0 is at -1. For signal cos t, the steady state response is Vm cos t plus theta. What is theta? In the last lecture, I told you how to find the response of a sinusoidal input. So first write ZS. K is 1. 0 is at -1. Now sinusoidal current or sinusoidal input, omega is 1. So you have to come to Z j omega. Now you will find the value of Z j omega at omega equal to 1. Okay. But I am only interested in is theta. Theta is basically angle of Z j omega. Always remember phase shift between current and voltage is equal to angle of impedance. So what is the angle? Like this. 45 minus 30 minus 60. So how much? 90 minus 45. ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल इंपीडेंस का एंगल होता है। चलो नेक्स्ट ट्राई करो यार, ट्राई द नेक्स्ट वन बेस्ड ऑन कपल्ड सर्किट।
So mutual inductance is 16. So what is the coefficient of coupling? M by root L1, L2. So answer is 0.4. Okay, next. Network function ZS has a pole at -1 by root 3 and 0 at minus root 3. Input is sine t. What is the angle of lead or lag of the current? So now beta, 0 is at minus root 3. Now voltage is sinusoidal. For sinusoidal, always we have to come to Fourier transform. Root 3 plus j numerator angle minus denominator angle. So see, angle of impedance is negative. That means capacitive. Capacitive means current will lead the voltage. Okay. Capacitive means current will lead the voltage. If the angle of impedance is negative, the inductor impedance is negative. Sorry, impedance is capacitive. बेटा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो जो भी इशू आ रहा है. Next, ESE 2009. Pole and zero of a driving point impedance is given. Z infinity is given. What is ZS? So now if you see beta, so K is 4. So answer is D. सर ये Z infinity K कैसे आया? ये देखो. Whenever S tends to infinity, always consider the highest power. Why? Take S square common. Okay, take S square common. Now see. This will be 1. So that is why K into this will be K. K into this will be K. Chaliye next. ESE 2009, V0 by VI is given to us. R is given to us as 2 ohm. What is L and C? What is L and C? V0 by VI is given to me. R is given to me as 2 ohm. What is L and C? So simply beta, we can find out V0 by VI using the voltage division. R by L, 1 by LC. Now compare. R by L will come out to be 4. Now R is 2, therefore L is 0.5. 1 by LC is 20. So C is 0.1. 0.5 and 0.1. Okay, very simple question. Driving point impedance is given. The value of A and B are. The value of A and B are. अब बेटा देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया हाउ टू सॉल्व दिस. ओके, ZS equal to 2 plus
Parallel combination means sum of admittance, reciprocal. This is Z. ठीक है? Again, this is a question based on network synthesis. Now, when the impedance starts with constant, you have to divide the highest power by highest power. In the previous example, I divided the lowest power of numerator with lowest power of denominator. Now divide the highest power by highest power. A square plus 3as plus ab. So that means I can write it like this: a plus by, okay. On comparison, directly I can say that my a will be 2. Now it has to be like this: s square plus 3s plus b. 7 minus 3a. Basically, 7 minus 6 is s plus 3 minus 2b. Now again you divide. You multiply by s square plus 3 minus 2bs. That means how much? 3 minus 3 minus 2b. 2b. Okay, divide it again. 2b. ये s तो आ गया और यहाँ 2b आ गया, एक तरह से 1 तो b आ गया हाफ, तो a 2b हाफ नहीं यार, और b ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर लास्ट वाला मैच भी नहीं कर रहा है। s plus 1 a आया अपना। इससे तो ऐसा फॉर्मेट नहीं बन पा रहा ना, अब यहाँ पे तो कांस्टेंट ही बच जाएगा। नीचे 1/s बचना चाहिए था ना, नहीं ऊपर s बचना चाहिए था, पर s बचना चाहिए था। s plus 1 नहीं यार, इस तरह से नहीं बैठेगा। फिर लोएस्ट से लोएस्ट पावर ही डिवाइड करते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है नेटवर्क सिंथेसिस वाले, उसमें आप लोगों को टाइम लगेगा ही लगेगा, बट अगर इसको 0 और इन्फिनिटी से करते तो बन जाता। ये तो डायरेक्ट बन जाता यार, इसमें हमने ज़्यादा मेहनत कर ली। तो सी Z0
is what? 3 by B, and Z infinity is A. ठीक है? So at S tending to 0, capacitor is open. So Z is 3, which is equal to A. कैपेसिटर ओपन है तो 2 + 1 3 आया ना, Z इंफिनिटी पे A आ रहा है. S टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर शॉर्ट, तो 2 आ जाएगा. 2 अगर आ गया तो Z0, सॉरी Z0 आपका 3 by B है. दैट मीन्स B is 1. A to B1, ये डायरेक्ट आ जाएगा. ये 0 और इंफिनिटी वाले से ही हो जाएगा, इसमें ना यहां तक जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं. इन द सर्किट शोन बिलो, ये वाला तो हमारा हो गया था ना. इसी टाइप का एक क्वेश्चन तो कल हमने किया था, चलो देख लेते हैं. ESE 2010 का है. फॉर द सर्किट शोन बिलो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एट पोर्ट 2 आर गिवन बाय S+2 = 0 and S+5 = 0 without knowing which refers to open circuit, which to short circuit. Then Z11 and Z22 are given by पोर्ट 2. पोर्ट 2 में अगर ओपन सर्किट करोगे, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, तो ओपन सर्किट में करंट 0, तो इंपिडेंस शुड बी इनफाइनाइट. बात है कि देखो, ये देखिए जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता दूं. नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंपिडेंस अंडर ओपन सर्किट. So open circuit means that current is 0. So Zs will tend to infinity. So it represents the pole. Okay. Under short circuit. So short circuit means voltage is 0. So Zs will be 0. So represents 0 of Zs. Okay, it represents 0 of Zs. So basically it is telling me I do not know which of these two is a pole and which is a 0. I do not know that which is a pole, which is a 0. Then what is the impedance? So Z22 may be S+2 by S+5, or it may be S+5 by S+2. We do not know what it will be. Okay. But we do know that one of these is a pole and other is a 0. Now, when we talk about Z22, it will be R2 parallel R1 plus SL, which means Y22 to take L common. Okay. This is the case, beta. So now we know that R1 plus R2 by L will definitely be greater than R1 by L. So that means S plus 2 should come in the numerator, S plus 5 in the denominator. The bigger term should be in the denominator. Bigger term should be in the denominator, S plus 2 by S plus 5.
either this or this. Now what about Z11? Z11 will be how much? SL parallel R1 plus R2. So S R1 plus R2 by S plus R1 plus R2 by L. So that is K1S. R1 plus R2 by L is 5. R1 plus R2 by L is 5. So KS by S plus 5. So answer is C. समझ गए कैसे सोचना है? KS by S plus 5. चलिए. Next, for the circuit shown below, the two natural frequency are S plus 1 equal to 0, S plus 4 equal to 0. Again, it is not known which is for open circuit, which is for short circuit. It means which of the two will come in the numerator and which will come in the denominator. We do not know that. Then what is ZS? Then what is ZS? Okay. I want to know the value of ZS. Now, 3 by 4 parallel. So in parallel, the admittances are added. Divided by 4 plus SC 3 plus 4R. Okay. S plus something we need. हमें S plus के फॉर्मेट में चाहिए तो हमें यहाँ से CR कॉमन निकालना पड़ेगा और यहाँ से C 3 plus 4R. Okay. So ZS 3 plus 4R. Now beta, out of these two, one value will be 1 and the other will be 4. अब इनमें से कौन 1 कौन 4 है? सपोज मैंने इसको 1 माना और इसको माना 4. By ratio. Wrong. Now 1 by RC is 4. This is 1. So RC is 1 by 4. P plus 4 RC is 4. Now take the ratio.
So R is basically 3 by 12, 1 by 4. And C will be 1. R will be 1 by 4, 3 by 4, 3 by 16. S plus 4 by S plus 1. ठीक है, 3 by 16, S plus 4 by S plus 1. A ऑप्शन. समझ में आया कैसे किया मैंने? ZS निकाला, मुझे नहीं पता न्यूमरेटर वाला S plus 1 है या डिनोमिनेटर वाला S plus 1 है, तो मैंने दोनों केसेस सॉल्व करके देख लिया. बेटा ये जो नेटवर्क सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े लंबे ही होते हैं. ESE 2010 for the circuit value of ZS at 0 and infinity are. तो देखिए अगेन, at S tending to 0, inductor will be short circuited. So ZS the impedance of this will be, impedance of this will be SC, SC, SC. ठीक है, impedance will be SC. So take 6 as the LCM. 3 plus 4 7 plus 1 8. Capacitor is short circuit. Or you can say inductor is open circuit. One by SC, 2 by S, तो B आएगा. ठीक है, अब आप ये भी कह सकते थे कि सर इन्फिनिटी पे तो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, ZS 0 आएगा, वो वैसे भी मैच कर जाएगा, वो वैसे भी मैच कर जाएगा. PDF नहीं मिल पा रहा है भाई, क्या करते हो तुम लोग? कितनी बार बताया? देखो अपन जाएंगे YouTube लेक्चर PDF में, एक बार मैं प्रीवियस ईयर में चेक कर लूं. प्रीवियस ईयर में चले जाओ, ESE PYQ का फोल्डर है यार, प्रीवियस ईयर में चले जाओ मेरे भाई, ESE PYQ मिल जाएगा. प्रीवियस ईयर में चेक करना है वेबसाइट पे. चलिए देखिए, फॉर द सर्किट शोन बिलो द गेन I0 by II, I0 by II. So basically I need to divide the current I0 by II. This impedance is 1 by S. This is S. 1 by S plus 6 plus S. So there are no zeros. What about the poles? This is from ESE 2011. Minus 6 plus minus B square minus 4AC by 2, 32. So root 8 minus 3 plus minus 2 root 2. Minus 3 plus minus 2 root 2. वही तो मैं कह रहा हूं, तो हमें ये देखना है ना ऑप्शन कैसे मीट कराएं यार. तो ये सिर्फ इंडक्टर को शॉर्ट और ओपन करके सॉल्व कर रहा है. ठीक है, तभी तो 1 by S में आ रहा है, यानी कैपेसिटर की टर्म्स में आ रहा है. VT at t equal to 0 for the relaxed circuit with unit step IT is. So IT is UT. This is from ESE 2011. So IS is 1 by S. What about VS? Okay. Now V0 plus so it will come out to be 1 by 2. That is 0.5.
Okay, ESE 2011. Very good. Voltage transfer function. So consider this as open circuit. This is series. This is again ESE 2011. So you can apply potential division. 1 by SC, R plus 1 by SC. So answer is voltage transfer function is this. V naught by Vi again. Again, consider this as open. These two are in series. Since this is open, current is 0. So voltage across capacitor is 0. So this voltage will be V naught. So answer is A. Correct? ESE 2011 again. कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो तो पीवाईक्यू में देखो मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं. इन इंडक्टर कैपेसिटर S0 एंड इंफिनिटी वंस अगेन. देखो भाई S0 पे इंडक्टर होता है SL, हो गया शॉर्ट सर्किट, तो तीनों कैपेसिटर पैरेलल में आ गए, वहां से इंपेडेंस आया. S इंफिनिटी पे SL हो गया इंफिनिटी, तो इंडक्टर विल बिकम ओपन सर्किट. तो यहां पे सिर्फ ये वाला कैपेसिटर बच गया. मुझे कैसे पता कि मुझे कैपेसिटर ही लेना है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 1 by S आ रहा है. इट मींस इट इज आंसरिंग इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, तो S0 और इंफिनिटी दे रखा है. इंडक्टर का इंपेडेंस होता है SL. तो S टेंडिंग टू इंफिनिटी पे Z इज इंफिनिटी, दैट मींस ओपन. S0 पे Z इज 0 माने के शॉर्ट. तो यही तो फंडा लगाया मैंने. ठीक है, चलो. ESE 2012 current changes from 5 ampere to 1 ampere in 0.4 second. Voltage is 40. What is inductance? बेटा सही बात है, कैपेसिटर भी ओपन शॉर्ट होता, लेकिन आंसर कैपेसिटेंस में देना है, वरना तो आंसर मेरा इंफिनिटी ही आएगा ना. हमेशा सर्किट ओपन या शॉर्ट हो जाएगा तो आंसर 0 या इंफिनिटी ही मिलेगा मुझे. बट मुझे जो आंसर देना है वो कैपेसिटेंस के टर्म्स में देना है, 1 by S के टर्म्स में देना है, इसीलिए मैं कैपेसिटर को मॉडिफाई नहीं कर रहा. आई नीड टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ 1 by S, दैट इज कैपेसिटर. अगर आंसर S के टर्म्स में मांगा होता तो माने इंडक्टर. ओके, इफ द आंसर वाज इन टर्म्स ऑफ S इट विल बी इंडक्टर, देन आई विल ओनली मॉडिफाई कैपेसिटर. ओके, सो आंसर इज 4 हेनरी. समझ गए भाई राकेश भाई? ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन, करंट इज अ यूनिट स्टेप स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ Vt. तो V इंफिनिटी 2.5 वोल्ट होगा बस. ओके, 2.5 वोल्ट. N1 by N2 ESE 2013. Now beta inductance, self inductance is proportional to square of the number of turns. N1 by N2 is 1. Current changes from 10 ampere to 1 ampere in half second. Voltmeter gives 36 volt. What is self inductance? ESE 2016. What is the self inductance? Half second, 0.5. 2 Henry. Correct? Answer will be 2 Henry. Very good, Ajit bhai.
Magnetically coupled circuit ESE 2016. Primary current goes from 4 to 0 in 10 microsecond. Voltage of 40,000 appears across secondary mutual inductance. So for mutual case, voltage is M di by dt, 40,000. Change in current is 4. 0.1 Henry. So answer is again C, 0.1 Henry. Next, ESE 2017. Two-port reciprocal network ABC is given. What is D? What is D? नेटवर्क सिंथेसिस पढ़ लो, अप्रोच क्लियर हो जाएगा राकेश भाई। और वैसे आज की डेट में सिंथेसिस से एज सच क्वेश्चन नहीं आते, पढ़ने के लिए पढ़ के जा सकते हो। तो D equal to 9. Consider the following as representation ESE 2017 of reciprocity. So reciprocity is of diagonal elements are equal. Reciprocity condition is Z12 equal to Z21. Y parameter. So here the circuit is open. I can write infinite impedance or zero admittance. Correct ना? मानते हो? जहां पे ओपन है, ओपन मीन्स Z tending to infinity or Y tending to 0. This is from ESE 2015, I think. Now this is a pi network. Directly I can write sum of admittance, negative of admittance, sum of admittance, negative of admittance. B आ जाएगा. Correct? Very simple. ESE 2017. Two-port network which is correct. In a two-port network shown which is correct. The answer is IA equal to IB, IC equal to ID. जितना करंट एंटर करेगा लीव करेगा KCL के हिसाब से, और इधर भी IC इक्वल टू ID. दोनों साइड के करंट को रिलेट नहीं कर सकते. You cannot relate the current on the two sides, but you can tell current on each side will be same, entering as well as leaving. ESE 2019. Mutual inductance describe the voltage induced at the end of a coil due to magnetic field produced by a second coil. Correct? एक कॉइल का वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल की. Dot convention allows a sign to be assigned to the voltage induced due to mutual induction. Yes. Coefficient of coupling is m by root L1 L2, not L1 plus L2, m by root L1 L2. ESE 2019. Two perfectly coupled coil each of 1 Henry self inductance are connected in parallel to aid each other. What is overall inductance? Perfectly coupled means coefficient of coupling is 1. So M is 1. So in parallel the inductance is, and since they are aiding each other, that is additive polarity. So this will be 0. A. Next, what is the value of equivalent inductance? Very simple, beta. Current is entering here, leaving here. Entering and leaving, subtractive. Entering, additive. Entering, leaving, subtractive. So whenever there is a subtractive polarity, we will subtract 2 times the mutual. We will subtract 2 times the mutual. So the answer is 21 Henry. थ्री लेक्चर वाला, उसमें 17 से 20 लेक्चर स्किप हैं या अकॉर्डिंगली हैं. यार देखो, अब अगर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन ने हाइड किया होगा तो मुझे पता नहीं, वैसे मैंने तो पूरे ही बनाए थे.
ESE 2002. There are pulsation in a power of a three-phase balance system. No. In a three-phase system, the advantage is that power is constant. Three-phase generator produce sinusoidal voltage and current. Yes. है ना, थ्री फेज जनरेटर साइनोसोइडल वोल्टेज और करंट बनाते हैं, सही बात है, पल्सेशन नहीं आते थ्री फेज में, पावर इज कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट, a three phase star connected balance load consumes p watt of power from a 400 volt line to line. If now the same load is connected in delta, what is power? बेटा देखिए, in star power is 3 VPH square by R. So in star, the phase voltage is 400 by root 3. So root 3 square will cancel 3. In delta, so power so that is 3P. So answer will be 3 times the initial power. D. Very good, Rakesh. Next, balanced delta connected load has a impedance 9 angle 30. What is the impedance of star? If delta has a impedance 9 angle 30, what is the impedance of star? ESE 2004, Z star is Z delta by 3. C. 3 angle 30. C answer. Two resistors of equal value are connected in series across the line B and C. Magnitude of voltage between A and the junction of resistor. Okay, this is B, this is C. A. Now it is asking this voltage VAD. Okay. So voltage across each resistor will be BC by 2. Okay. Because दोनों इक्वल है ना सीरीज में, तो आधा आधा वोल्टेज आएगा। AB plus BD. Now assume VAB as reference, that is 400 angle 0. So BC will lag the AB by 120. So BD is half of that. Cos 120 is minus half. Sine of minus 120 minus root 3 by 2. Hundred will come out common. It will be under root 12. तो बी 200 रूट 3. ठीक है, 200 रूट 3. अगर अभी तक नहीं किए हो बेटा, अभी कितना टाइम, अभी तो 1 महीना है, करने के लिए कर सकते हो अजीत, 1 month इज एनफ. थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड कंज्यूम्स P वॉट पावर, तो स्टार में आएगा P बाय 3. रिवर्स ऑफ क्वेश्चन 31. 31 में उल्टा ही तो था, स्टार में P था तो डेल्टा में 3P हो गया था. अब उल्टा है, डेल्टा में P है तो स्टार में क्या होगा, P बाय 3.
Three-phase, three-wire supply ESE 2007 feeds a star-connected load of 3 equal resistor. Now, if one of the resistor is removed, what is reduction in original power? So, original power is 3 VPH square by R. Now, in star, VPH is VL by root 3. Okay, this is the power. Now, when you remove one of the resistances, the other two resistances will come in series. Correct? So, these two are now in series. The voltage across them is line voltage. So, this is initial power by 2. So, reduction is 50%. ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है बेटा. This question has been repeated in multiple exams and it is very simple. The answer is 50%. Beta, 1 month in engineering services, Vani. A balanced RYB sequence star connected source RN 100 volt delta connected load 8 plus J6. Phase current and the line current value. So load is delta connected. So convert load to star. To 30. Now line is equal to phase. But remember, this is correct. But always compute phase current. Always compute IPH from original connection. Beta, what happens is when you modify the load, the line current will come out to be same, but phase current will get modified. Phase current will get modified. So you can use the line current, but do not use the phase current. Whenever you modify the load or the source, the line current that you will get is correct, but always compute phase current from the original connection. ESE 2012, a three-phase four-wire system supplies power to a balanced star-connected load. Current in each phase is 15 ampere. Current in neutral wire, 0. Because the load is balanced. So neutral current is always this. For balanced system, IA plus IB plus IC is 0. Therefore, neutral current is 0. Next, output power of a filter is 100 milliwatt when signal frequency is 5 kilohertz. When the frequency is increased to 25 kilohertz, the power falls to 50 milliwatt. What is the decibel change in power? 3 dB. In power, always use 10 log. तो minus 3 dB. और वैसे भी आप सोच सकते हो बेटा, when the power becomes half, okay, when the power becomes half, in that case it is called as the 3 dB frequency or half power frequency. Directly you can imagine, जब भी पावर हाफ होती है तो उस फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या 3 dB फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है. Since the power is becoming half, it will be changing by 3 dB.
सेम एज क्वेश्चन 34 कि पावर जब आप स्टार में निकालेंगे 3 VPH स्क्वायर बाय आर, तो पावर इन डेल्टा VPH is VL, तो पावर इन स्टार इज पावर इन डेल्टा बाय 3। लेकिन ऐसा मत सोचना बेटा कि लोड को आपने ट्रांसफॉर्म किया है। डू नॉट थिंक दैट वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ डेल्टा कनेक्टेड लोड टू स्टार। नो, सपोज आई हैव 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 10 ohm connected in delta. Now I delete that connection and again reconnect 10 ohm resistor in star, then power will become 1/3, not by transforming the connection on your copy. समझ गए? अगर मैं 10 ओम के 3 रेजिस्टेंस डेल्टा में देता हूं, आप अपनी कॉपी में स्टार में कन्वर्ट कर लेते हो, पावर विल रिमेन द सेम। इफ यू कन्वर्ट इट टू स्टार इन योर कॉपी, द पावर विल बी सेम, बट if you reconnect them in star, then power will become 1/3. There is a difference in the two cases. The pole zero pattern of a certain filter is shown in the figure. The filter must be now beta zeros. I don't see any zeros. Sorry, I don't see any poles. So either the diagram should mention zeros like poles and zeros. So these are the 2 zeros. These are the 2 poles. S equal to 0. HS will be how much? 4. So you can say low pass filter. If the gain at low frequency is high, we can call low pass filter. Now delta connected load is there, the line current and the power. Okay. Remember, this is from ESE 2015. Remember, when you calculate IPH, you can apply Ohm's law. But in delta, IL is √3 IPH. So 11.5 into √3, 19.92. What about power? 3 IPH square into R. Because real power only resistance will consume, not the reactance. See, 6.348 kilowatt. A balanced load is connected in delta. What is the impedance per phase in star? Very easy. ESE 2015. In star, it is Z delta by 3. So answer will be B. When you convert delta to star. A three-phase star connected load is operating at a power factor angle phi. What angle is phi? Phi का मतलब क्या होता है बताइए? ESE 2017. What is the meaning of phi? It is always angle between VPH and IPH. Remember, power factor is always calculated based on VPH and IPH, not on the basis of VL and IL. No. A filter that allows high and low frequency to pass but attenuates the frequency between the two is band stop. हाई को भी पास कर रहा है, लो को भी पास कर रहा है, बट बीच में रोक रहा है, तो बैंड स्टॉप. It is stopping a range of frequencies between the two frequency. A three-phase star-connected 1000-volt alternator
supplied power to a 500 kilowatt delta connected induction motor. Current in each alternator and motor phases are. मोटर के फेज में कितना करंट आएगा, ऑल्टरनेटर के फेज में कितना करंट आएगा. Now input power to the motor, this is mainly a machine's problem actually. 500 by 0.9. Now root 3 VL IL cos phi. Because generator will supply input power to the motor, it will supply electrical power to the motor. By default, you will assume that this is line voltage. Okay, if nothing is mentioned in three phase, we always assume line voltage. Now motor is delta connected. So answer is B. B. Generator is star, so IL is IPH, but motor is delta. IPH is IL by root 3. Three-phase motor can be regarded as a balanced star-connected load. It draws 5.6 kilowatt at a voltage 220. Current is 18.2. Power factor. So power is root 3 VL IL cos phi. So what is the power factor? Cos phi. .8074. So answer is A. This is my power factor, 0.8074. Minimum capacitance. Minimum capacitance for the supply transformer rated 5 kVA. Secondary voltage 120 volt. Switching frequency 400 Hz. Capacitance बताना है बेटा. तो ये मेरी कैपेसिटर की पावर हो गई. ओमेगा इज 2 पाई एफ. देखो बेटा, जो आपको क्वेश्चन दिया है लो लोड करंट वाला, आप डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकते कि दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डीसी मशीन और सिंक्रोनस. मैं डीसी के हिसाब से बोल रहा हूं क्योंकि लो लोड करंट पे सैचुरेशन नहीं आएगा. द इफेक्ट विल बी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग. मिनिमम कैपेसिटेंस फॉर सप्लाई ट्रांसफॉर्मर्स विद सेकेंडरी वोल्टेज स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज. ये वाला मुझे चेक करना पड़ेगा, इसमें डेटा मिसिंग लग रहा है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की पावर दे रखी है. डेटा इनसफिशिएंट है यार यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट.
Power consumed by the balanced star connected load in terms of delta connected load. This I have already proved. Star power is 1/3 of the delta power. ठीक है? So Cowher form and the Foster form are the realization of, ये network synthesis में use होता है. Cowher form and the Foster form are the realization of impedance function. Okay. Now this question बेटा उसी तरीके से किया जाएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया था. Last question, let me show you. ZS. So you will say SL. Parallelly, we will add the admittances 2S plus 1 upon like this. Okay. Now we need ZS is given to me as 4S4 plus 7S square plus 1. So I need 1S, okay, 2S cube plus 3S. So since you need S, divide highest power by highest power. So divide it 4S4 plus 6S square. S square plus 1. So we can say 2S so on comparison L is 2. Now divide this 2S cube plus 3S ये S होगा. ठीक है. So from here C is 1, L is 2, C is 1. B. इस तरह से जाना पड़ता है बेटा, इसमें स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके जाना पड़ता है. एंड दिस इज द बेस ऑफ योर नेटवर्क सिंथेसिस. तो इस तरह के क्वेश्चन आप नेटवर्क सिंथेसिस से एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर. ओके. हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू फॉर IIT खड़गपुर कंट्रोल पावर सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट सिग्नल प्रोसेसिंग. बाप रे, एक साथ इतने सारे इंटरव्यू में तुम्हारे. फिर तो सारी इंजीनियरिंग तैयार करो बेटा अपनी, सारे के सारे सब्जेक्ट तैयार करो. कोई भी एक चीज ये नहीं कहते कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स देन. ओके. चलिए, तो आई विल सी यू टुमारो देन. टुमारो वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिकल मशीन. कल से मशीन के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं. तो टुमारो इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन ऑफ द मशीन. बी रेडी. देयर विल बी 7 सेशंस इन मशीन. ओके. आफ्टर विच वी विल मूव ऑन टू पावर सिस्टम. चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी.